Good morning, students. Today we are going to start a new chapter in chemistry, that is matter around us pure. The first chapter was matter in our surrounding, that what all matter are there in our surrounding, in our daily life, which we see, which we feel. So now we are going to talk about is matter around us pure, that whatever the matter is around us, whether it is solid, liquid, gas, they are pure or not. Okay, so to explain it for this, first I have made one table. This is a very simplest one, this flow chart. Can you see? First, matter. Solid, liquid, gas are known as matter. Okay, so matter are of two type: pure substance or impure substance. Impure substance we say mixture also. Okay, pure substance are those substance which are made up of only one kind of particle. Okay, those substance which are made up of only one kind of particle, those are known as pure substance. Impure, those are made up of one or more type, two or more type of particles. Okay, those are called impure substance, or we can say mixtures. They are the mixtures. Then pure substance are divided into two things, that is compound and animal. Element. Pure can be known as element, we say element, or a compound. I will going to describe it topic wise in other videos as well. Okay, so impure substance are of two type: homogeneous mixture and heterogeneous mixture. This is very new term for you, homogeneous and heterogeneous. I will give you a brief of this later on in the other videos. First, I am going to talk about homogeneous mixture. Homogeneous mixture contain only true solutions. Okay, and heterogeneous have two type of solutions, that is suspension and colloids. This flow chart is there, and we will further going to understand about these topics one by one. Okay, so pure substance, that can be element or a compound. Pure substance is one which is made up of only one kind of particle. Okay, वो सब्सटेंस जो कि एक ही काइंड ऑफ पार्टिकल से बने होते हैं, उनको हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं. एग्जाम्पल, इफ आई विल टॉक अबाउट आयरन. अगर मैं आयरन का एक बार लूँ तो उसमें सारा आयरन ही होगा. ओके, वेयर एवर आई विल जस्ट सर्च, इट विल बी आयरन ओनली. अगर मैं गोल्ड की बात करूँ, इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट गोल्ड, अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्योर गोल्ड, दैट मीन्स इट इज कंपोज्ड ऑफ प्योर गोल्ड ओनली. ऐसा नहीं होगा कि उसमें आयरन मिल जाएगा या कॉपर मिल जाएगा या सिल्वर मिल जाएगा. इट विल बी मेड अप ऑफ ओनली gold. Same with the bromine, iodine, carbon, sulfur, copper, silver, gold, mercury, silicon. These all are a pure form. Even see, I told you that pure compounds are of two type, that is element and compounds. Fine. So elements, we have 118 elements till now discovered. Okay, so elements जैसे आपके ये हो गए, ये एलिमेंट्स है: कार्बन, सल्फर, आयरन, कार्बन, सिंबल ऑफ कार्बन इज सी, सल्फर, ओके, sulfur S, okay, iron Fe. So these are the symbol, these are known as elements. And what are compounds? When two elements combine together in a fixed proportion to make any compound, like water is H2O. Okay, H2O is a water. When two molecules of hydrogen is going to combine with one molecule of oxygen, then only what happen? Water will be made. Okay, mean to say two atoms of hydrogen and one atom of oxygen. Same carbon dioxide, CO2, 1C and 2O. If I will write H3O, so this is not water. This is absolutely not water, because it is not having a exact formula, that is H2O. Okay, it is not in a fixed proportion. And if I will see CO3, so this is known as carbonate, and this is also not a carbon dioxide, because here it should be two molecules of oxygen should be there with the one molecule of carbon, then only it will form CO2 gas, that means carbon dioxide. So this is a basic difference between element and compound. Elements are a single atom, you can say, जिस चीज़ से, एक सिंगल चीज़ से कोई चीज़ बनी होती है. जैसे कार्बन की बात करें तो कार्बन एक ही टाइप का एलिमेंट है उसमें सारा. कंपाउंड, व्हेन टू और मोर एलिमेंट कंबाइन टुगेदर. हियर इन द कंपाउंड, हाइड्रोजन इज ऑल्सो देयर, oxygen is also there. If I am talking about H2SO4, okay, so here hydrogen is also there, sulfur is also there, and oxygen is also there. So it doesn't matter whether it is two elements are combined together or 3 or 4 or 5. Okay, compound is that thing which have combination of
Let's talk about impure substance. Impure substance, as I already told you, are also known as mixture. Mixture, like if you mix a sugar with salt, it is also it is mixture. It will not make any of the formula. Okay, you will not get any formula of that mixture. You are just mixing water with sugar, that is also a mixture. Sand with water, that is also a mixture. So whenever you are mixing two compound together, okay, and they are not making any formula, or they are not mixing in fixed proportion to make any formula, that is, they are known as impure substance or mixtures. Like a mixture is one which contain two or more different kind of particles. Okay, mixture वो है जिसमें दो और more different kind of particles होते हैं, चाहे वो atoms हो या फिर molecules हो. Like example, there are so many salt solution. Agar if you salt solution, see here you have to see the different. Salt solution means salt is added in water. Okay, when you add salt, when you mix salt and water, it makes a mixture, that is a salt solution. Same sugar solution, same milk is also a mixture. Milk is also a mixture. Sea water is a mixture, air is a mixture. Okay, air is a mixture. Why? Because they never form any formula. Okay, we know that air consists oxygen, nitrogen, carbon dioxide and many more gases. Okay, but they don't have an exact formula together, so they are known as air. They are known as mixture. Then sugarcane juice, then soft drinks, sharbat, jaggery, rocks, minerals, petroleum, LPG, biogas, tap water, whatever the water is coming at your home, that is also a mixture. Tea, coffee, paint, bricks, soil, wood, these all are impure substances which are known as mixtures, because they don't have any formula, as well as they don't combine together to form in a fixed proportion by mass. So this table I have already showed you. So matter is of two types, pure and mixture. Pure or impure substance, you can say. Pure, which are made up of only one substance present, no impurities, nothing will be there. Okay, and impure and mixture or impure are more than one substance present. एक से ज़्यादा substance होंगे. इसमें pure में they are of two type, elements and compound. Elements cannot be divided into simpler substance. आप element को oxygen है, O है, आप इसको अब इस और छोटा नहीं तोड़ सकते, आप इसको और डिवाइड नहीं कर सकते. ठीक है, तो ऑक्सीजन, कार्बन को और डिवाइड नहीं कर सकते. ठीक है, आयरन को और डिवाइड नहीं कर सकते. Fe is the symbol of iron. So these are your elements. Okay, these are your elements. Compound made from element chemically bounded together. जब दो एलिमेंट्स एक दूसरे से मिलते हैं एंड दे केमिकली बाउंड, एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से केमिकली बाउंड हो जाते हैं, मतलब उनके बीच में कोई बॉन्ड स्टेब्लिश हो जाता है, उसको हम कंपाउंड कहते हैं. एज एग्जांपल आई हैव टोल्ड यू H2O, ठीक है, SO2, CO2, ओके, एंड what else, you can say H2SO4, HCl. These all are compounds because they are made up of more than one element and combined in a fixed proportion by mass. Then we will talk about mixture. Mixture are of two type, homogeneous mixture and heterogeneous mixture, which we will learn later on. Now we will talk about elements. See, elements is a substance which cannot be split up into two or more simpler substance by. Elements are divided into three things: metals, non-metals and metals. So we will discuss, you must have studied it in your 8th class also, what are metals, what are non-metals, what are metalloids. So we will discuss the difference between metals and non-metals quickly. Now just see, metals are malleable and ductile, that is metal can be hammered into sheet and drawn into वायर्स. हम क्या कर सकते हैं, मेटल को हम मेलेबल और डक्टाइल होते हैं, दैट मीन्स हम उनको शीट्स बना सकते हैं उनकी, एंड वी कैन ड्रॉ देम इनटू वायर्स ऑल्सो. दैट्स वाई हम इलेक्ट्रिक वायर यूज़ करते हैं विच आर मेड अप ऑफ मेटल्स. देन नॉन मेटल्स आर ब्रिटल. जैसे आप यू जस्ट टेक अ piece of chalk and you just break it. So that is the property, जब कोई चीज़ break हो जाती है उसको हम brittle कहते हैं. They are neither malleable nor ductile. ना आप उसको sheet में draw कर सकते हो non metal को, ना आप उसको ductile wire की तरह use कर सकते हो. Then metal are good conductor of heat and electricity. metal क्या होते हैं, heat और electricity को अपने से pass कर लेते हैं, ठीक है, because of the free electron present in them. And non metal are bad conductor of heat and electricity, except these exceptional cases are very important, except diamond, which is a good conductor of heat. Diamond
हम सोचते हैं नॉन कंडक्टर है, बट एक्चुअली इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. एंड ग्रेफाइट विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ग्रेफाइट इज can conduct electricity easily. These are the exceptional case of non-metal. Though all the non-metals are bad conductor of heat and electricity except diamond and graphite. Then मेटल आर लस्चरस, दैट मीन्स शाइनी एंड कैन बी पॉलिश्ड. आप मेटल को पॉलिश कर सकते हो एंड दे आर ऑलरेडी वेरी लस्चरस. इफ़ यू विल सी कॉपर, इफ़ यू विल सी आयरन, यू कैन सी द शाइनी थिंग, यू कैन सी द शाइन ओवर देम. सो मेटल्स आर यूजुअली शाइनी. नॉन मेटल्स आर नॉन लस्चरस. नॉन मेटल कोई शाइन नहीं करते, डल होते हैं बहुत देखने में, एंड कैन नॉट बी पॉलिश्ड, एंड हम पॉलिश भी नहीं करते उनको. एक्सेप्ट, एक्सेप्शनल केस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट आयोडीन विच इज़ लस्चरस नॉन मेटल. एक्सेप्ट आयोडीन जो कि क्या करता है, शाइन करता है, लस्चरस होता है. मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. मेटल मेनली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर के. एक्सेप्शनल केस अगेन मर्करी. मर्करी थर्मामीटर में यूज़ होता है, पहले होता था, अब तो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर्स आ चुके हैं. तो एक्सेप्ट मर्करी विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है. मोस्टली मेटल्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए वो सॉलिड होते हैं. बट सिर्फ मर्करी को छोड़ के, बिकॉज इट कैन कंडक्ट हीट, इट कैन कंडक्ट हीट, तो हम क्या करते हैं, ये एक मेटल है विच इज़ लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. देन नॉन मेटल मे बी सॉलिड. नॉन मेटल कैसे हो सकते हैं, सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं रूम टेम्परेचर में, बिकॉज इनके बॉन्ड्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते आपस में. तो ये सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं. देन मेटल आर स्ट्रॉन्ग एंड टफ. बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, टफ होते हैं. दे हैव हाई टेंसिल स्ट्रेंथ. इनकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होती है. नॉन मेटल आर नॉट स्ट्रॉन्ग. नॉन मेटल वहीं पे स्ट्रॉन्ग नहीं होते, बहुत वीक होते हैं. दे हैव लो टेंसिल स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ भी इन पे नहीं होती. तभी मैंने आपको चौक का पीस की बात करी, उस टाइप का होता है नॉन मेटल कि आप आराम से उसे ब्रेक कर सकते हो. दे डोंट हैव स्ट्रॉन्ग, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे डोंट हैव स्ट्रेंथ. मेटल आर सोनरस. मेटल क्या होते हैं, सोनरस होते हैं. सोनरस क्या होता है, सोनोरस. सोनरस आपके साउंड के लिए बोला जाता है. मतलब वेन एवर यू स्टक अ मेटल विद एनी थिंग, यू विल लिसन अ रिंगिंग साउंड. आपको एक रिंगिंग साउंड सुनाई दे. Now let's talk about metalloids. What are metalloids? See, I told you that elements are of three types: metals, non-metals and metalloids. So metalloids, see, metals and non-metals की properties जब किसी एक element में होती है, ठीक है. The metalloids are those substances which have both the properties of metal and non-metal. Mean to say they can act as a metal as well as non-metal. So those are known as metalloids. Metals हो गए, ठीक है. metals के बाद बीच में metalloid आ गए. metalloid बीच में क्यों आए? Because they have the property of metal as well as the non-metal. Okay, so here the element which shows some properties of metal and some properties of non-metal are called metalloids. So when the scientists were discovering about the metals and non-metals, and they were segregating metals and non-metals which are found in the earth crust, so they found that okay, there are something which is having some property of metal and some property of non-metal. So they have given the name to that substance metalloids. उन elements को उन्होंने नाम क्या दे दिया, metalloids दे दिया. And metalloids are like example boron, silicon, germanium. Okay, boron is represented by B, silicon is represented by Si, and germanium is represented by Ge. It's my suggestion to all of you that you have plenty of time at home, so please segregate whatever the elements are there till now. You can just read it that what all are metal, what all are metalloids, and what all are non-metal, because later on in chemistry you will encounter those terms again and again. So you should know the symbol, you should know that whether that element is a metal, non-metal or metalloid. Now mixture, let's talk about mixture. Okay, so a mixture is a substance which consists of two or more elements or
कंपाउंड नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या फिर कंपाउंड आपस में मिक्सड होते हैं बट केमिकली मिक्स नहीं होते, केमिकली एज आई टोल्ड यू बाय गिविंग इलेक्ट्रिसिटी, बाय गिविंग हीट, बाय गिविंग लाइट, जब ये तीन चीज़ें यूज़ ना करके कोई केमिकली उनके कंबाइन नहीं होते, ठीक है, टुगेदर नहीं होते, तो उनको हम क्या कहते हैं, मिक्सचर्स कहते हैं, वी कॉल देम